or increase the health. We need chemistry to mitigate the impacts of the climate change. We need chemistry, in other words, for human rights and dignity, to leave no one behind. Not just any chemistry, we need green chemistry, sustainable chemistry, and chemistry that respects the boundaries of the planet. Chemistry that is inclusive, that works for the benefit of all. Indeed, the modern world, as never before, needs chemistry. The relation between the green chemistry with the sustainability can be judged from their definition. As you can see on your screens, the green chemistry is the design of the chemical products and processes that reduce or eliminate the use and generation of hazardous substances. On the other hand, sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. In short, we can say that sustainable development is the main goal, and green chemistry is the way or a path towards that goal. Now, as I already said, the green chemistry is actually what? Utilization of a set of principles that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substances in the processes like design, like in manufacture, and application of the chemical process. Green chemistry involves obviously design and redesign of chemical synthesis, chemical products to prevent pollution and thereby solve the problem. In past, chemistry actually caused a lot of environmental problems that we are aware of today. And in order to solve these problems, now chemistry is converted into green chemistry, and 12 principles of the green chemistry were developed by two researchers in 1998, and these 12 principles we are going to discuss today. First is prevention. Prevention, what? It is better to prevent waste than to treat or clean up the waste after it has been created, because cleaning up of the waste consists of many additional steps in the manufacturing, which may increase the cost of the process, or which may in return also increase a source of energy or anything else that is in return might create more and more of the waste. E factor is actually the factor used to measure the waste that is generated by a chemical process, and it is what? Kilogram of the waste divided by a kilogram of the product. Second is atom economy. What it states is synthetic methods should be designed to maximize the incorporation of all materials used in the processes into the final product. Traditionally, efficiency of a reaction is being measured by calculating the percent yield. But during the reaction, normally, not all of the atoms are utilized and instead are wasted either in formation of the byproducts or go down the drain with the solvents. Hence, the chemist must not wholly rely on the percent yield that is traditionally being used, that efficiency of the reaction is measured by the percent yield, but instead, atom economy should be used. What it says that maximum incorporation of the atoms of the reactants into the desired product. कि आपके पास कितना atom है, for example, we are using nitrogen or sodium, for example. The sodium has how many, if we are using 1 gram of the sodium or 1 mole of the sodium, how many atoms of the sodium that particular amount or 1 gram of the sodium has, and how much sodium would be converted into any product that it is being made. So instead of percentage yield, it is imperative to use actually the percent atom economy, that using not the weight of the product, but use how much atoms are converted into the product, and the formula you can see on your screen is used to calculate the atom economy of the synthetic process. Next is less hazardous chemical synthesis. Wherever practical, synthetic methods should be designed to use and generate substances that possess little or no toxicity to human health and the environment. There's an example of synthesis of the chlorine. Chlorine is very important, for example, in many plastic industries, like in making of PVC, etc.
Initially or in the past, it was made by using fuel cells that use mercury cell membrane. And that mercury, as you all are aware, is very, very dangerous for environmental as well as human health. Then there was a disaster that is, you must be aware of Minamata disease. It is actually a disease that uh, affects the nervous system. It is caused by the mercury pollution. First, it was discovered in Japan in 1956, and then a disaster in Canada in 1970 caused deaths of many, many, many local people because of the mercury poison from the chloralkali process. But now, presently, this mercury the cell membrane has been converted or is discarded, and now cellulose-based cell membrane are being used, which are comparatively environmental friendly and human friendly. Another example could be elimination of the leaded petrol. As you are aware, that leaded petrol was preferred because lead as an anti-knocking agent was used in the petrol. But as lead has many environmental as well as health hazardous impacts, it is now being used, now be discarded, and now BTEX, that is benzene, toluene, ethyl benzene, or xylene or ethanol, is being used as anti-knocking agent in the petrol. Fourth is designing safer chemicals. Like, chemical products should be designed to affect their desired function while minimizing their toxicity. As you can see, all of these steps are actually interrelated, and they tell one in the same things, but they have different aspects as well. Okay, now coming to the designing of the safer chemical, let me tell you an example that there is a Presidential Green Chemistry Challenge Award by EPD US, and in 2014, the winner of this award was Solberg Company. That is a company actually that designed the filters, silencers, separators, and firefighting foam, etc. And why were they given this award? Because they created a new type of firefighting foam that did not contain fluorosurfactants. Now, fluorosurfactants are harmful for liver. They cause ecotoxicity. They bioaccumulate in the environment, and hence, in return, impact the human beings. So they created fluorosurfactant-free 540 foam that use hydrocarbon surfactant instead of fluorosurfactants. Then we have the fifth principle that says safer solvents and auxiliaries. Auxiliaries are also the chemicals that are used in the processes during dye printing in the textile industries. This principle states that the use of auxiliary substances should be made unnecessary wherever possible and innocuous or benign when used. Okay. Now, this principle is being followed by many pharmaceutical companies like Pfizer, like Sanofi, etc. They have created guidelines for their chemists, in which they have added what could be the conventional solvents and what would be the safer solvent instead of those conventional solids to reduce the environmental impacts. The third principle is design for energy efficiency, and it says that energy requirements of the chemical processes should be recognized for their environmental and economic impact and should be minimized. If possible, synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure. What it says कि जब आप synthesis कर रहे हो कोई भी chemical synthesis, either it's a pharmaceutical company or either it is something else, कोई chemical जैसे हमने chloralkali का कहा, the energy requirements should be made minimum, and environmental and economic impacts should be mentioned or should be thought of. And the synthetic and for example, if there's a process that requires a high amount of heat or pressure, so research innovation should be done, or research should be done to के वो जो आपका process है, it should be conducted at ambient temperature or room temperature or minimum pressure that is feasible. Seventh principle is related
somewhat related to the sixth principle, that is use of renewable feedstock. What is renewable feedstock? A raw material or a feedstock should be renewable rather than depleting whatever technically and economically practicable. कि आप लोग renewable feedstock for the source of energy use करें instead of using conventional sources that are finite. And from these two principles, a concept of biomimicry comes to mind. What it is actually, biomimicry, the term is derived from two Latin words, bios meaning life, and mimicry meaning to imitate. It is actually a design discipline that studies nature's best ideas and then imitate these designs and processes to solve human problem. It is basically innovation inspired by the nature. Okay, the first example comes in mind is the development of aeroplane. The Wright brothers actually observed how the birds are flying, and then on the basis of their observation, they tried for the production or creation of the aeroplanes. Another example of the biomimicry could be artificial photosynthesis. As you are aware that in 21st century, energy is a key issue, and energy is wastage, as you are aware, while transmission and conversion processes. And if we look at the life cycle of the energy production, we look at how much energy is actually available for the work. And due to wastage during transmission and conversion processes, more and more fossil fuel is obviously being burned. Hence, low efficiency. The efficiency of the conventional energy sources is low. So efficient, non-polluting sources are needed. So the artificial photosynthesis process comes into mind. It actually, just like photosynthesis, the process through which the plants are making food for us, the plants are making oxygen for us. By absorbing sunlight in their chloroplast, we can also mimic this same process. We are mimicking the same process and capturing the solar light with the help of semiconductors, photocatalysts, and converting this solar energy into useful products like hydrogen generation, like in many biodiesel formation, or in many chemical formation, like in we create reactive oxygen species to treat water, etc. These are the things. This is also an example of the biomimicry. Okay. Other examples of biomimicry could be, for example, pigment-free color. In nature, structures rather than chemicals, के structures जो हैं, जो हमारे पास butterflies और peacocks में हम लोग जो colors देखते हैं, they are not because they have certain pigments or certain dyes in their bodies, but instead the structures in nature are arranged in a way that they scatter the light. जो sunlight पड़ रही है या कोई भी light पड़ रही है, वो से scatter होती है उनकी surface of the structure. For example, melanin rods are present in butterflies and peacock cell, or certain thin layers of the keratin. They scatter the light, and as a result जो scattering हो रही है और जो color reflect हो रहा है, उसकी वजह से हमें different colors नजर आते हैं. So why not we use this science, this biology, natural science, instead of using dangerous dyes for our various purposes. There is an example of preservatives. Now, red and green algae, according to research, produce halogenated metabolites, which primarily utilize bromide. वो bromide use कर रही है जो red green algae है, और उस जो halogenated metabolite जो है, it has demonstrated antimicrobial activity. So why not use the halogenated metabolites originated from the red green algae instead of using the artificial preservatives that are dangerous for health? Now, these are the differences between the man-made system and biological systems. Man-made systems are simple, disconnected, and monofunctional. Biological systems are complex, interconnected, and symbolic. Man-made systems obviously are wasteful. Biological systems have zero waste. Man-made system is resistant to change, and biological system, as you are aware, they are formed, they are created after millions and billions of years of evolutionary changes, so they are adapted to constant change.
Man-made systems have long-term toxins, but biological systems have no long-term toxins because what nature makes, ha- it has ability to degenerate it as well. Man-made system is centralized. Biological systems are diverse. Man-made systems are mostly dependent on the fossil fuel, as you are aware. Biological systems run on the current solar income. Obviously, plants are making our food with the help of solar energy. Every process on our earth is because of the solar energy. Man-made system have maximum one goal. हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका मैक्सिमम वन गोल ही होता है, उसका एक ही एंड यूज है, उसका एक ही पर्पस है. बट जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो एज अ होल चल रहा है, वो पूरा के एक प्रोसेस की वजह से दूसरा प्रोसेस होता है और दूसरे प्रोसेस की वजह से तीसरा प्रोसेस होता है. एंड ऑब्वियसली मैन मेड सिस्टम इज एक्सट्रैक्टिव, कि हम लोग सिस्टम किस तरह से बना रहे हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मटीरियल फ्रॉम द नेचर. However, biological system is additive. It is हर एक biological system, हर एक natural system is adding something to the environment. Now, goal number 8 is reduce derivatives. Unnecessary derivation, for example, in a synthesis, we are using a blocking group, or we are using physical or chemical processes की कोई temporary modification के कोई external steps हैं वो use कर रहे हैं, so they should be minimized or avoided if possible, because such steps require additional reagents and can generate waste. Next is catalysis. Catalytic reagents are superior to stoichiometric reagents. जैसे मैंने पहले भी आपको पहली जो स्टेप प्रिंसिपल्स थे उसमें आपको डिस्कस किया है एटम इकोनॉमी के, whenever we are making a product or a chemical product, not all of the reactants are utilized. Instead, like about 50% of the reactant are wasted as byproduct or go down the drain with the solvents. So by addition of catalyst for the same products, catalyst क्या करता है, it increases the efficiency of the reactants to be converted into products. Basically क्या करता है, the energy that is being utilized by the reactants to be converted into product, it actually decreases the energy. उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा reactant जो है वो convert होगा into product. Hence हमारे पास जो reactant है उसकी wastage कम हो जाएगी. So catalysis is a ninth principle for the green chemistry. Then we have 10th principle for green chemistry, that is design for degradation. Chemical products should be designed so that at the end of their function, they break down into innocuous or benign degradation products and do not persist in the environment. For example, during the manufacture of the computer chips, a large amount of water is used, but now this process is replaced by a solvent system which utilize carbon dioxide instead of water, and they are producing nanochips from this process. Another common example you might be aware of it, that is biodegradable bags. It is based on the 10th principle that after the usage of these bags, the plastic bags are degraded into biological components और वो हवा में उड़ जाते हैं और उसका कोई impact नहीं होता on the environment. Next is real-time analysis for pollution prevention. Obviously, analytical methodologies need to be further developed to allow for the real-time in-process monitoring and control prior to the formation of the hazardous substances. हमें monitoring और control के processes, analytical techniques further develop करनी है ताकि हमें information पहले ही पता चल जाए कि किस तरह से formation और ये hazardous substances है, और इससे क्या होगा कि हम लोग minimization कर सकेंगे of those hazardous substances. The 12th principle says inherently safer chemistry for accident prevention. It says substances and the form of substance used in the chemical process should be chosen to minimize the potential for chemical accidents, including releases and explosion. किस किस्म के substances आपके chemical processes में use हो रहे हैं, you should be aware of them, that what could be the potential hazard or accidents that substance could cause. For instance, past में there is a chemical called methyl isocyanide. It is a molecule that is used in insecticides. Okay, in 1984, this compound created Bhopal incidents. के जो industry
इंसेक्टिसाइड क्रिएट कर रही थी, उससे रिलीज हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड इनटू द एनवायरनमेंट एंड इट killed 3800 people in Bhopal in India in 1984, or it was a huge disaster. इसी तरह storing chemicals that are reactive together could create explosions in the industry. So in order to minimize that, हमें अपने जो chemistry है उन chemicals की they need to be checked, और हमें processes इस तरह के करने हैं कि उनको हम लोग potential जो hazards हैं उनको minimize कर सकें. The 12th principle actually incorporate basically all other 11 principles and hence achieve overall goal of the green chemistry. Now, from this in 12th principle and 11th principle, another concept comes to the mind, that is biosecurity. Biosecurity क्या है? Prevention of disease-causing agents entering or leaving any place where they can pose a risk to farm animals and other animals, humans, or the safety and quality of a food product. कोई भी एजेंट्स है डिजीज कॉजिंग, उनको जो है हमने that could cause disease to the animals, to the food chain, to the humans, to anyone. And biosecurity can be achieved by health safety and environment authorized insecticides, जो typical bodies हैं, regulatory bodies हैं, उनके जो authorized insecticides हैं, उनको use करके, for example, DDT was banned because it was creating mess in the food chain. और पाकिस्तान में जो हमारे पास स्कैवेंजिंग जो बर्ड्स हैं उनको उनकी पॉपुलेशन कम कर दी थी बिकॉज ऑफ द डीडीटी. इसी तरह प्रॉपर फार्म प्लानिंग कि फार्म्स में एनिमल्स की प्लेसमेंट किधर होनी चाहिए, केमिकल्स की प्लेसमेंट किधर होनी चाहिए, इस तरह की प्रैक्टिसेस से जो है हमें बायोसिक्योरिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं. प्लस रिस्ट्रिक्टेड एंट्रेंस ऑफ द अनऑथोराइज्ड व्हीकल्स, लाइक अनऑथोराइज्ड व्हीकल्स आ रही हैं, हो सकता है कि दे कंटेन reagent और समथिंग एल्स, कोई वायरस है, कोई किस तरह से है कि वो आके आपके फार्म में, फार्म एनिमल में या ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा रहा है. थ्रू these simple ways we can biosecure the area. Now take 10 minutes and Google, it's a short assignment for you guys and let's discuss it when you come back. मेजर इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान में जो हमारे पास कौन कौन से मेजर कोई इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हुए हैं, कोई डिजास्टर्स हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको इंडिया की एग्जांपल दी, भोपाल इंसिडेंट्स हुआ या मीनामाटा डिजीज हुई थी कनाडा में, जापान में, तो क्या पाकिस्तान में इस तरह के कोई मेजर हैजर्ड्स हुए हैं ड्यू टू नॉट प्रैक्टिसिंग ग्रीन केमिस्ट्री एक्सेट्रा? प्लीज टेक 10 minutes to Google these incidents.
Well, I hope you have searched the major environmental hazards or disasters in Pakistan. Uh, can anyone tell me आप लोगों को कौन सा कोई major disasters मिले हैं आप लोग? Khalil Nazar, can you, sir, can you please tell me what you have found? Yeah, I have searched here some disaster due to flood, due to environmental changes, and flood came in 2022 and 2010 and 2009 in Karachi, and it's make disaster. Millions of people affected. Yes, sir. Yes, sir. Yes, exactly. That one is also. Uh, any other someone else? Junaid Fida, sir, can you please tell me if you have found any major environmental disaster in Pakistan? Yes. Um, Actually, Pakistan is vulnerable to most natural hazards. It is prone to floods, earthquakes, droughts, and cyclone storms. The climate changes and global warming are the most alarming issues, risking millions of lives across the country. The major reason of these environmental issues are carbon emission, population explosion, and deforestation, which is growing very rapidly. Good, good, good. Mohammad Asif, sir, can you please explain what sort of natural disaster or environmental hazard you have found in Pakistan? Osama Kajri, can you elaborate what kind of natural disaster or any other that you have found, any other disaster or hazard that you have found other than the previously two discussed by our gentleman here? Man, I found one environmental accident actually. Mm-hmm. It was back in 2003 when almost 30,000 metric tons of crude oil, which was spilled on the outside of the port of Karachi in Arabian Sea. Oh, Uh, it uh, was called as, but it didn't, that was a big environmental disaster and accident good that I because found. of unsafe practices. Yeah, that good. Yes, yes. Mm-hmm. Anyone else wants to add any other environmental or natural or disaster in Pakistan? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम सर। कैसी हैं मिस आयशा? सर मैं ठीक, आप ठीक हैं? बाकी अल्लाह का शुक्र है। हाँ, एक्चुअली एनवायरमेंटल डिजास्टर्स जो है ना हमारे, ये अर्थक्वेक्स हैं और ये जो फ्लड्स हैं और ये सारी चीजें हैं। नेचुरल अताबाद यस। लेक को देख लें, जो हमारा एक उसका फ्लड का ही वो था, अर्थक्वेक से शुरू हुआ और फिर उसने क्या क्या नहीं किया हमारे साथ। अच्छा, हुँ, मैं एक दो चीजें और जो हमारे साथ, हमारा बल्दिया टाउन जो है वो हमारा गो के वो इंडस्ट्रियल अपसेट था, एक हुँ, इंडस्ट्रियल इंसिडेंट था, लेकिन बल्दिया टाउन में 260 के करीब, 280, 290 इस तरह से करीब लोग मरे थे। ये 2010, 11, 12 की कहानी है, अगर किसी को याद हो तो। जो गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी थी। जी, जी, अच्छा, जी, जी। उसके साथ ही अगर अब ये भी रिसेंट तो खैर नहीं, 5-6 साल इसको भी हो गए, भावलपुर में एक ट्रक पलटी हुआ था, टैंकर एग्ज़ैक्टली पलटी अहमदपुर हुआ था शर्किया या अहमदपुर शर्किया में। Well, that was an incident. It involved basically, it was, lack of knowledge, or I don't know what to हुँ, call it, but it was a major environmental disaster, as well as we spilled some 60,000 liter of fuel into हुँ, the field and contaminated, all the soil around there. और उसके बाद जो आग लगी है और फिर जो लोग मरे हैं और वो सारा हुँ, कुछ, तो आई कंसिडर दैट आल्सो अ बिग डिजास्टर फॉर एग्ज़ैक्टली। अस। और ये अभी एक साथी ने जो स्पिलेज का कहा है, ये रिसेंटली भी एक, अगेन इट्स नॉट रिसेंट, शायद 5-6 साल हो गए हैं कि एक और टैंकर जो है वो उधर हुआ था गिडानी में। तो ऐसे अक्सर वो होते हैं कि ये शिप ब्रेकिंग के लिए आता है, एंड इट टर्न आउट के यार उनके पैंदे में जो है बहुत सारा जो है वो फर्नेस ऑयल पड़ा हुआ है,
जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, लेकिन ये है कि अब वो ना जब काट चुकते हैं तो पता चलता है कि वो रिलीज हो गया है। अच्छा, हमारे यहाँ इन चीजों की न रिपोर्ट होने की एक मेजर वजह मुझे नहीं मालूम है, मेरे साथी इस बात को नोट करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ये न होने के बराबर है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म नहीं है। exactly. यानी अब हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि लाहौर की जो हवा है वो बहुत आलूदा है और उसमें बहुत स्मोग और ये और वो है, सारा कुछ है। मेरा ख्याल ये है कि इस्लामाबाद की, खैर इस्लामाबाद को लाहौर के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन कराची के इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो इससे ज्यादा खराब हो सकता है। लेकिन चूंकि लाहौर में अच्छा बुरा जैसा भी है, छोटा सा मैकेनिज्म है रिपोर्टिंग का, तो वो जो है ना हमें वो बताता है कि आप जो है ना यहाँ खराबी है। तो पाकिस्तान के डिजास्टर्स जो हैं वो सरफेस ना होने की एक बेसिक वजह ये भी है कि हमारे पास रिपोर्टिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो Exactly. दीज आर माय 2 cents। That's good. That's thank you, sir. Thank you, all of you. बाकी यही नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर, दोनों किस्म के पाकिस्तान में काफी बाकी रिपोर्टिंग का इशू है. Reason being, maybe there is some sort of mafia working at the back. For example, I think it was 2017 or maybe 18. Newspaper में हल्का फुल्का सा we read के रावल डैम में बहुत सारी मछलियां मरी हुई मिली हैं. तो बेसिकली व्हाट इट वाज कि कोई केमिकल जो इंडस्ट्री सामने है, उन्होंने कोई टॉक्सिक केमिकल रिलीज किया था इन रावल डैम वाटर, जो हम लोग पीते हैं और जो जिसके अंदर से मछलियां भी पकड़ के खाते हैं, और उसकी वजह से वो मछलियां जो हैं वो डेड थी. और वो रिपोर्टिंग का यही हुआ कि एफआईआर डली गई है, लेकिन उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं है कि क्या हुआ था, कौन सी इंडस्ट्री इसकी रिस्पॉन्सिबल थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सिमिलर इस केस विद डिफॉरेस्टेशन इन द मार्गला हिल्स. मार्गला हिल्स नेशनल पार्क जो है वो हमारा इट हैज बीन मार्गला हिल्स एक्चुअली उसको नेशनल पार्क का दर्जा इसलिए दिया गया है ताकि वहां पे डिफॉरेस्टेशन का जो है ना वो मना है, वहां से फॉरेस्ट की कटिंग नहीं हो सकती. बट जो हमारी स्टोन क्रशिंग हो रही है मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में भी, और जो हमारी टेक्सला साइट पर अगर आप लोग जाएं, वहां पर 10 साल पहले मार्गला हिल्स की कितनी हाइट थी और अब आप देखें कि वो बिल्कुल ना होने के बराबर है. तो बेसिकली व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉट रिपोर्टिंग दीज इंसिडेंट्स एंड हैजर्ड्स? हमारे इसके पीछे कोई बहुत बड़ी माफिया है जो कि मना कर देती है, या गवर्नमेंट एजेंट्स वगैरह सारे इन्वॉल्व हैं. खैर, देयर वाज अनदर इंसिडेंट, लैंडस्लाइडिंग हुई थी इन 2020 ज़ियारत मार्बल माउंटेन में ड्यूरिंग माइनिंग, और 22 जो वर्कर्स थे उनकी डेथ होगी. और द कॉज वाज एक्चुअली लैंडस्लाइडिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट जब आप लोग माइनिंग कर रहे हो तो देयर इज अ नीड टू ट्रेन योर वर्कर्स के इन केस ऑफ दिस डिजास्टर आपको किस तरह से एक दूसरे की हेल्प आउट करनी है, किस तरह से आपने उसको वो चेक करना है, किस तरह से आपने बचना है. प्लस जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, दे वर नॉट गिवन प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, तो उसकी वजह से 22 वर्कर्स वर डेड. इस तरह के कई वाकई पाकिस्तान में हुए हैं रिगार्डिंग हमारी अपनी ही केयरलेसनेस की वजह से, जो हमने सेफ्टी प्रैक्टिसेस नहीं की, या हम ग्रीन केमिस्ट्री को फॉलो नहीं किया, हमने नहीं देखा कि कौन सी चीज को किसके साथ नहीं रखना, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स नहीं देखा, लाइक ऑयल टैंकर सेफली जो है वो क्यों नहीं जो है उसको अच्छी तरह सपोर्ट क्यों नहीं दी हुई थी टैंकर को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, now what we have discussed so far is how green is green. कैसे पता चलेगा कि आपकी जो ग्रीन है वो ग्रीन कैसे है? एटम इकोनॉमी, ई फैक्टर कैलकुलेशन, लाइफ साइकिल असेसमेंट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट. एनर्जी यूजेज कितना हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट आर यू यूजिंग फॉर द सिंथेसिस ऑफ द केमिकल्स, एंड क्वांटिफाइंग एंड कैरेक्टराइजिंग वेस्ट. और ये सारे के सारे आपने जो कैलकुलेशंस करनी है, इट शुड बी डन एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिंथेसिस, लाइक एट द pre-manufacturing state, at the manufacturing state, at the product delivery state, at the product use, and obviously end of the life के उस वक्त क्या हो रहा है कि quickly biodegradable हो रही है, recycle हो सकती है, etc. Now, the challenges of the 21st centuries are different from that of the 20th century. 20th century had local challenges, but now we have global challenges like climate change, like global warming. 20th century's issues were acute, but now
we have chronic, which जिसका affect small level पे हो रहा है firstly, but at long term के लिए हो रहा है. 20th century के environmental issues were apparent or obvious, but now they are subtle. Subtly जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से इम्पैक्ट्स हमें नजर आने लग जाते हैं. 20th century के environmental issues were immediate, कि आपने एक प्रोसेस किया और उसका immediately रिजल्ट कोई इशू हुआ तो immediately नजर आने लगा. बट नाउ मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी जनरेशनल है. दैट इज वाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमारे क्रिएट हुए हैं और हमारा एजेंडा 2030 का डेवलपमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ दीज मल्टी जनरेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज. प्लस हमारे 21st के सेंचुरी के जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं दे आर कॉम्प्लेक्स. So in order to mitigate the problems and challenges of the 21st century, a new concept was coined, that is green engineering. It is actually what? A design, discovery and implementation of the engineering solution within an awareness of potential benefits and impacts throughout the lifetime of the design. The goal of green engineering is to minimize adverse impacts while simultaneously maximizing the benefit to the economy, society, environment. Basically, वही sustainable development goal वाले हमारे पास है. Green engineering में what are you doing is using the principles of the engineering. आपने क्या करना है? Minimize करना है जो harmful impacts हैं आपके environment को, आपकी human life को, आपकी society को. But considering, आपने कंसीडर अपनी इकोनॉमी को, सोसाइटी को, एनवायरनमेंट, तीनों को कंसीडर करते हुए जो है ना आपने क्या करना है? अपने इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को चेंज करना है या इनोवेशन लानी है. Just like green chemistry, green engineering has 12 principles and they state designer need to strive to ensure that all materials and energy inputs and outputs are as inherently non-hazardous as possible. जो भी आप raw material use कर रहे हैं अपनी engineering में, अपनी construction में, either it is a building, either it is a mechanical instrument, you need to check that all the materials और जो energy input है आप किस तरह से energy उनके ऊपर लगा रहे हो, like कि कहाँ से आए, it should be non-hazardous. जितनी ज़्यादा possible हो उसको non-hazardous होना चाहिए. Next is, it is better to prevent waste than to treat or clean up waste after it is formed. Green chemistry में भी इस तरह का एक principle था कि prevention is better as compared to clean up later on, क्योंकि it creates additional step or additional cost and might also create more waste production. Third is, separation and purification operations should be a component of the design framework. जो भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो, जो separation और purification है, these should be the components of the design process. आपने डिजाइनिंग करते हुए ये दोनों components, separation और purification, separation may be of any byproduct, of maybe of raw material or maybe of any waste material, वो आपने उसको अपने design framework में include करना है. Number 4, system components should be designed to maximize mass, energy and temporal efficiency. ऐसा कंपोनेंट्स आप लोगों ने यूज करने हैं जो सिस्टम में अपने इनोवेशन लानी है, ये रिसर्च करने हैं, दैट शुड बी एबल टू, जो आपका प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, इट कुड बी मशीनरी, इट कुड बी बिल्डिंग, इट कुड बी एनीथिंग, उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, एनर्जी की फॉर्म में मैक्सिमम हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और हमें टाइम की भी बचत हो रही है. नाउ फिफ्थ इज, system components should be output pulled rather than input pushed throughout the use of energy and material. This concept actually is based on there is a saying or a proverb or something, to a man with the hammer everything look like a nail, right? So chemistry or chemical industries have always been driven by cheap and raw material and in abundance. Obviously every industry wants to create input lowest cost possible, like they are using natural gas, they prefer natural gas, they prefer coal as a source of energy because they are cheaper. However, despite the benefits, waste generation is inevitable. So मेरा to a man with hammer everything looks like a nail कहने का मकसद ये था कि availability of hammer is not, should not be the only consideration कि इंडस्ट्री को हैमर मिल रहा है, इंडस्ट्री के पास अगर ये रिसोर्सेज हैं तो इट शुड नॉट बी द ओनली थिंग दैट दे नीड टू कंसीडर, बल्कि
देयर इज अ नीड टू कंसीडर रियल आइटम टू बी नेल्स, कि असल में आइटम्स कौन से आपको चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री को किस तरह की प्रैक्टिसेस चाहिए या किस तरह के प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन है, किस तरह के वेज हैं जहां पर उनको मेहनत करना है। फोकस ऑन द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन रादर देन कॉस्ट, कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो रादर देन द कॉस्ट, कि आप कितना ज्यादा कॉस्ट लगा रहे हो। एंड ईज ऑफ प्रोडक्शन ड्राइविंग द नीड, के एक मैन्युफैक्चरर की, एक बिल्डर की top priority should be what end product, not the raw materials that are available, easily available. इसका एग्जाम्पल 3D प्रिंटिंग हो सकता है। वी हैव डेवलप 3D प्रिंटर्स जो मिनिमम एनर्जी यूज करते हुए आपको स्ट्रक्चर्स डिफरेंट किस्म के डिजाइन करके दे जाते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स उसके हमारे पास स्पेशली जैसे सर्जिकल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो इससे बन रही हैं। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ प्रिंसिपल सेट embedded entropy and complexity must be viewed as an investment while making design choices on recycle, reuse or beneficial deposition. Now entropy is what the hidden energy, कोई भी process होता है उसके साथ कितनी energy release हो रही है, कितनी energy उसके लिए चाहिए, that is entropy, right? The natural processes hide a series of system and network that are interconnected, and by understanding those या life cycle assessment करने के बाद product जो है उसकी improvement हम इस तरह से कर सकते हैं कि basically we are designing the products that they have characters favorable for the recycle, reuse or benefits or anything that they can be repurposed, instead of creating complex products that they cannot be reused or recycled, or they are used wasted after the usage. Next says कि targeted durability, not immortality, should be real goal. मतलब the product should be durable, product should be strong, but immortal product हमें नहीं चाहिए. For example, there's example, we can take example of the plastic bag, normal terms. It is not durable, but it is immortal. Plastic is immortal, but हमें durability चाहिए, हमें immortality नहीं चाहिए. Okay. Next. Design for unnecessary capacity or capability should be considered a design flaw. This includes engineering one size fits all solution. कि unnecessary capacity और capability जो है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब minimize the production, कम से कम बनाए, but उसके purposes just like a biological system, as I have already discussed, कि biological system में एक चीज से दूसरी चीज का फर्क है, दूसरी चीज से तीसरी चीज का फर्क है. तो while building और making a framework of a project, आपको ये देखना है कि हमें ऐसा मल्टीपर्पज कोई प्रोजेक्ट हमें would be best, would be better. Multi-component products should strive for material unification to promote disassembly and value retention. मतलब material के इसमें concept of reusing आ जाता है कि आप उसको disassemble करो और उसको जो है ना उसकी value को retain रहे. इस तरह के products बनाएंगे उसको disassemble करके आप reuse कर सको, उसकी value retain रहे instead of being wasted. Number 10 says design of processes and system must include integration of interconnectivity with available energy and material flow. जो डिजाइन प्रोसेसेस हैं उनको जब आप लोग प्लान बना रहे, कोई भी बिल्डर है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, they should consider the what type of energy and material are available and what type are not available, what type are better and what type of not better. आउट ऑफ द वे जाके मटेरियल्स का डिजाइनिंग और मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, टू द इकोनॉमी एंड टू द सोसाइटी. Number 11 says performance matrices include designing for performance in commercial afterlife. Same वही आगे using purpose आ जाता है उसका. And number 12 से design should be based on renewable and readily available input throughout the life cycle. वही वाली बात आ गई कि डिजाइन जो भी है उसको आपने कंसीडर करना है, रिन्यूएबल सोर्सेज होनी चाहिए और रेडिली अवेलेबल सोर्सेज होनी चाहिए, बिकॉज नॉन रेडिली अवेलेबल सोर्सेज के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा इनपुट्स लगाना पड़ता है जो कि हमारे लिए ग्रीन नहीं है. जस्ट लाइक ग्रीन केमिस्ट्री, ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर इंटरकनेक्टेड और ये एक वन एंड सेम मीनिंग इनका हो जाता है. टिपिकल एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं ग्रीन इंजीनियरिंग की,
Typical examples are solar power plants. Obviously, we design the semiconductors or we design the power plants in a way कि वो मैक्सिमम एफिशिएंटली जो है मतलब सरफेस एरिया इतना ज्यादा हो कि वो मैक्सिमम सेल लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लें। इस तरह जियोथर्मल एनर्जी में भी हम लोग क्या करते हैं कि पावर हम जस्ट उन्हीं साइट्स को देते हैं जहाँ पर जियोथर्मल अवेलेबल हैं, प्लस कौन सा मटेरियल यूज करके ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा हमारा सिस्टम, कौन सा मटेरियल यूज करके नहीं होगा, कौन सा जो है लोकली अवेलेबल है और कौन सा लोकली अवेलेबल नहीं है, ये सारी कंस्ट्रेशन आती हैं व्हेन वी बिल्ड अ जियोथर्मल एनर्जी सिस्टम। देयर इज एन एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमारे पुराने लोग कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह से हाउसेस आर डिजाइंड इन अ वे कि दे कलेक्ट द रेन वाटर and then how they can store this rainwater for the future purposes. Plus, there are some latest innovations in the green engineering as well. We have intelligent lightings. जो artificial intelligence light होती हैं, they turn in off automatically जब आप लोग कहीं कमरे में enter हो, off हो, obviously it is saving energy. We have carbon sequestering cement. What it does actually that this cement has सोडियम बाइकार्बोनेट इन इट। आप नॉर्मल सीमेंट में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की एक पर्टिकुलर एडिशन अमाउंट ऐड कर लें तो उससे क्या होगा कि इट वुड कैप्चर द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इट इनटू सोडियम इंस्टेड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट और सम एनी अदर कार्बोनेट, एंड देन वी कैन कैप्चर द कार्बन और इस कार्बन को आप यूटिलाइज कर सकते हो ऑब्वियसली बिकॉज कार्बन इज अ रॉ मटेरियल फॉर many things. We have electric vehicles, ये भी एक latest innovation है for green engineering की. Then we have another example of radiant floors. इसमें क्या होता है कि you install the heating tubes under the floor और उन heating tubes को आप power किससे कर रहे हो? By renewable energy sources like solar है, like hydro power है, or like geothermal and etc. इनसे हीट कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि आपका जो फ्लोर से हीट है वो आपके ऊपर तक जाएगा और उससे आपका रूम जो है वो गर्म हो जाएगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज extensively power using heaters or inverters etc. Then we have example of plant-based cooling. There are some green buildings that have plants and moss all over them. उससे क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट आता है, जिस तरह से आप लोगों को दरख्तों की छांव के नीचे मजा आता है, इसी तरह ये वाला कॉन्सेप्ट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू बिल्डिंग्स. इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम्स नहीं बीच में लगाने पड़ेंगे और the buildings are automatically being cooled by the plants. And then we have electrochromic smart glass that is still in initial stages of development. Basically, the concept is that the glass has tiny electric components and they would capture the heat signals when the sunlight would fall on them. और उससे क्या होगा, they would reflect the sunlight instead of absorbing or emitting. और उससे क्या होगा कि आपकी जो रूम है और any building or any room or any car, इससे होगा कि वो नहीं गर्म होगी. So these are the latest innovations in green engineering. Our list goes on, but I have only included all these. So if you are interested, you may look for others as well. Now, I have also added some example of the green airports. 2 airports है जिनको मैंने add किया, but there are many in the world. First is Boston Logan International Airport in the United States. Or this airport won world's first leadership in emerging environmental design accreditation. Kyun? Because it is green building. Like its terminal A features roofing and pavement surfaces designed to reflect heat instead of absorbing it. So इससे cooling effect है, उसके अंदर उनको additional systems लगाने की जरूरत नहीं है to cool their airport, as well as low flow bathroom fixtures to save water. We have another airport in Sweden, Stockholm Arlanda Airport, or it was the first European airport to achieve carbon neutrality in 2009. Carbon neutrality is a concept जो ये कहता है कि हमें net carbon zero emissions करनी है, like by either by
creating systems that are minimizing the carbon dioxide production, or by using the carbon dioxide or capturing the carbon dioxide and convert it into useful products, ताकि हमारे पास जो atmosphere में carbon dioxide है that is creating global warming, that is creating climate change, जो उसको हम minimize कर सकें. तो this is a carbon neutral process, concept of carbon neutrality. And this airport was the first European airport to achieve the carbon neutrality in 2009. And how this airport is green? Because they have they use biofuel system instead of electricity to heat the terminal. They collect water by a series of wells linked to underground aquifer before being sent to the terminal's air conditioning system during summer and to a biofuel power heating system in winter. Basically, this is what it's doing. और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपनी बिकॉज ऑफ मिनिमम यूजेज ऑफ एनर्जी ये हमारे पास कार्बन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट ये अचीव किया इन्होंने, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं. प्लस दे हैव आल्सो लो पावर एलईडी लाइटनिंग, हेंस एनर्जी कंजम्पशन की मजीद कम है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन इंजीनियरिंग? Obviously, first benefit is reduce emissions. Emissions आपकी जो है reduce हो रही हैं. Tax incentives ये हो रहे हैं कि आपके पास incentives, there are some जैसे US में है या और जो हमारे पास welfare countries है वहाँ पर ये है कि maximum utility of the energy और maximum pollution minimum pollution पे जो है या minimum utility of the energy पे आपको incentives दिए गए हैं कि taxes कम है या कुछ इस तरह से इनको पॉलिसीज अवेलेबल हैं. प्लस ऑब्वियसली आपके पास एमिशन रिड्यूस हो रही हैं, आपके पास आप ग्रीन की तरफ जा रहे हैं तो आपके यूटिलिटी बिल्स भी कम आएंगे. प्लस इम्प्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी आपकी इम्प्रूव होगी. सस्टेनेबल लिविंग की तरफ प्रमोशन जा रहा है और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इंजीनियरिंग वुड मेक or encourage people to follow other environmental practices as well. Hence, हमारा goal achieve होने के करीब हो सकता है of the sustainable development. Let's see the Pakistan scenario. We have a non-profit organization, Pakistan Green Building Council, जो हमारे पास it's a primary source of information and collective action for sustainable buildings in Pakistan. It not only educates the markets, it also engages stakeholders and in order to work towards a sustainable, healthy and low carbon future, obviously. And I have also added some two major green buildings, green engineering standards. One is BREEAM standard है हमारे पास. It is actually environmental assessment method है और रेटिंग सिस्टम फॉर द बिल्डिंग ये आपको सर्टिफाइड करता है किसी बिल्डिंग को इफ दे आर प्रैक्टिसिंग ग्रीन इंजीनियरिंग. अनदर वन इज लीड, दैट इज लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंटल डिजाइन. और ये जो है हमारे पास लीड इज एन इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी वो कनाडा में है और कनाडा ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है. एंड व्हाट आई फाउंड दैट हमारे पास majorly followed जो है accreditation और certification in green engineering में हमारे पास lead की है. And I found some examples for the LEED certified buildings in Pakistan. For example, we have Sapphire Textile Mills, home textiles को कहते हैं, वो भी LEED certified है. Dolmen City कराची में जो City Bank है, it is a green engineered building that is LEED certified. और हमारे पास महमूद टेक्सटाइल मिल्स ऑल्सो उसका यूनिट 2 जो है वो भी लीड सर्टिफाइड है. यू कैन फाइंड मेनी मोर इंडस्ट्रियल एरियाज और बिल्डिंग्स ऑन गूगल और नेट जो लीड सर्टिफाइड हैं या जो लीड में रजिस्टर हैं. दैट आर दे आर मतलब पाकिस्तान में भी वी आर प्रैक्टिसिंग द ग्रीन इंजीनियरिंग एज वेल. नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इको लेबल. Eco label, what are they? They are actually the marks placed on the product packaging or in e-catalogs that can help consumer and institutional purchasers quickly and easily identify those products that meet specific environmental performance criteria and are therefore deemed environmentally preferable. Actually, these are the labels, or you can say the stickers or the labels or the symbol
they are placed on the packaging of the product or their e-catalog कि वो consumers को identify करने में कि which product is practicing what type of eco-efficient process or environmental friendly process, so they can and they can be the judge okay, which product is environmentally preferable or not. And there are two types of eco label. One is single attribute which focus on the single life cycle कि ये product while being used कौन सा environmental aspects को consider कर रहा है, and it only involves the use phase. For example, VOC emission के volatile organic compounds क्या किसी प्रोडक्ट से इमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, it would have a single attribute eco label. Then we have another type of eco labels which is multi attribute. ये focus करता है entire life cycle पे, production, usage, and then after life के इसका क्या बन रहा है scene, production to disposal obviously, and various environmental issues के carbon dioxide release, sulfate release, nitrate release, water pollution हो रही है नहीं हो रही, energy efficient है या नहीं, etc. It consists of various attributes. Some of the examples are Energy Star. Energy Star is the most common. You might have seen this label onto the chips of the CPUs or computer components. This label means actually this label actually means that the product is energy efficient. Okay. Next is safer choice. Safer choice chemical that it means that the ingredients or the chemicals that were used in the product are environmentally safe without sacrificing the quality or performance of the product. Then we have smart way. Smart way reduces the transportation related emissions. The smart ways is a label is given to those products जो transportation के दौरान जो emissions हुए हैं, like for example using the fossil fuel, उसमें कम से कम transportation fuel उन्होंने utilize किया तो उसको smart way दिया जाता है. There is another label of water sense. वो water efficient product है कि उसके अंदर हमने water का wastage नहीं किया, कम से कम water use करके उसको बनाया गया. Then we have significant new alternative policy SNAP. It evaluates and regulates substitutes for ozone depleting or climate change causing chemicals. Like for example, a refrigerator with the cooling agent CFCs, chlorofluorocarbon, without the chlorofluorocarbon might be given this eco label. Now these eco labels that I have shown you discussed are the EPD US, that is Environmental Protection Department of the United States approved labels. वो लोग evaluate करते हैं कि आपका product किस तरह से safe है, and then they give you that label if the organization is interested. Now, other countries have also developed eco labels, like Japan has developed the carbon footprint of the product system, a product labeling screen के carbon footprint we have previously discussed कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना कार्बन फुटप्रिंट है और उस हिसाब से उन्होंने इको लेबल डिसाइड किए. इसी तरह कोरिया हैज आल्सो लॉन्च्ड अ कार्बन फुटप्रिंट लेबल and low carbon certificate label. Thailand has also developed a carbon reduction label based on the qualitative criteria, and Taiwan has also launched its quantitative carbon label in 2010. I couldn't find the eco labels provided by the Environmental Protection Agency of the Pakistan, but we are following, just like in green engineering, जैसे LEED certified building है, तो we are following the international labels in our country. Only those manufacturers that who are interested, वरना हम लोग अपने जो products हैं जो हम पाकिस्तानी products पे देखते हैं, they don't have any eco label, most of the products of them. That's it for all. If you have any question or if you want to add something to today's topic, आप लोग कर सकते हैं आराम से. कोई question हो या कुछ add करना हो. Hello. Hello जी. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. Good evening to everyone.
Good evening. I would like to add about the tanneries. Is there any regulations in Pakistan regarding tanneries? They are emitting a lot of chemicals. They are using. There are no rules and regulations. They are putting this all, in the सब केमिकल्स जितनी भी फैक्ट्री हैं अपना नाले में फेंक देते हैं फिर आगे जाता है फिर वो खेतों में जाता है सब्जियों उगती हैं और फिर ये सारा मामला इस तरह का होता है The thing is, Pakistan does have regulation. जो हमारा पाकिस्तान Environmental Protection Act है, जो जिसको हम PEPA पीपा कहते हैं, it has regulation. It has developed NEQs जो हमारे पास indexes होते हैं. We have everything, but the thing is, यहाँ पर practice नहीं हो रही. मतलब कि it is a duty of, for example, Environmental Protection Agencies जो provincial level पे भी हैं, जो फेडरल लेवल पे भी हैं, टू चेक द कंटामिनेशन जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह पुट कर रही हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन आई यूज्ड टू बी इंटर्न इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन रावलपिंडी, तो उनके पास सैंपल्स, दैट वाज देयर ड्यूटी टू कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल इन मरी इन रावलपिंडी, और उसको चेक करते थे कि वेस्ट वाटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, लाइक आइदर इट्स अ बायोलॉजिकल एजेंट, कोई फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है क्या, हैवी मेटल है, सल्फेट है, नाइट्रेट है. बट द थिंग इज कि हमारी प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे मतलब हमारे पास रूल्स हैं बट प्रैक्टिस नहीं हो रही. हमारे पास जैसे क्लीन एयर एक्ट है, हमारे पास सेफ वाटर एक्ट है, बट वो हमारी इन प्रैक्टिस नहीं है. बट वी डू हैव लेजिस्लेशंस. Right. And what about this drone attacks? It will also come it will also fall in the same category. Are you talking about eco labels? No, 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 no. This drone attacks or any bombing or they are destructing buildings or using this material for destruction. Exactly. Jesse, I was listening to the Trump old clip. It was old or it might be new. He was talking about electric vehicles or electric tanks. कि जो wars में use होते हैं tank, they should be run on electricity instead of fuels. So he was making fun of it actually. तो ये चीजें यूज करती हैं, ऑब्वियसली अनसस्टेनेबल है. इफ यू सी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके अंदर कंसीडर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट होता है. तो जो हम लोग वॉर की जो चीजें बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करें, ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब में न्यूक्लियर हमारे पास पोल्यूशन क्रिएट होती है. जैसे जापान को देख लें, जापान इज ओनली यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, राइट. तो उसके ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड हर साल उसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिकल्स छपते हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर तनकीद की जाती है कि इट्स डिस्पोजिंग इट्स न्यूक्लियर वेस्ट इनटू द ओशन. तो देयर माइट बी अ केस के जो आपकी कवरिंग है, जो आपके जिसके अंदर आपने सेफ किया हुआ है, जो कंटेनर्स हैं, आपने ठीक है अच्छे से उसको अच्छे से पैक किया हुआ है कि रिलीज नहीं हुई, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी आफ्टर 10 or 20 years वो रिलीज हो जाए इनटू द सी, और इट वुड ऑब्वियसली कॉज बायोअक्यूमुलेशन, और फिर आगे से हम पे इम्पैक्ट आएगा. तो ये चीजें भी इसके अंदर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एडेड हैं. Right. Especially in Pakistan, if we just look into the food, wallahi, there is a lot of food chemicals and destructing is a big disaster for the human health. एग्जैक्टली जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बैन हो गए. फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोला जो हम लोग पीते हैं, उसमें जो हमारे पास आर्टिफिशियल जो फ्लेवर कैरामल फ्लेवर डालने के लिए और कलरिंग के लिए जो यूज होता है, आई डोंट नो EA समथिंग, इट हैज अ नंबर. तो इट्स वेरी हार्मफुल, इट्स कैंसरस for the human cells, but we are still using it and we are still drinking it. Basically the thing is, we have laws, we have regulation, international as well as at national level, but हम लोग उनको follow नहीं करें क्योंकि यहाँ पर कोई उसकी penalty नहीं है. Yeah, like no penalty and also no awareness. Exactly, awareness भी नहीं है. Thank you very much. Thank you. It's really very Thank you for informative and it's well, the people are really unaware. It's a new topic
particularly in the sustainability, this chemical and the things like this, it needs a lot to have awareness and implementation. Exactly, awareness is very important. A bundle of thanks. Thank you very much for enhancing our knowledge, and we will do our best to implement wherever we can in our projects and wherever we can. Yeah, thank you. Anyone else likes to add or ask something? All right. I would like to add something कि जो हमारे पास ISO certification है, all these aspects that we have discussed today वो ISO certification में आती है. For example, ISO 14101 जो है वो हमारे पास 14001 for EMS Environment Management System, ये सब कुछ इसमें added है. Plus we have ISO 45001 as well, जो रिलेटेड है टू द जॉब हैजर्ड्स. उसमें भी ये सारी की सारी चीजें, हैजर्डस केमिकल्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं. इसके अलावा वी हैव ISO 14025 जो डील करता है विद इन्वायरमेंटल लेबल्स एंड डिक्लेरेशन. और ISO 14025 के साथ वी हैव ISO 21930 जो के प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो डील करता है. सो वी हैव ऑल दीज थिंग्स इन ISO. ये वही हो गया कि जो अभी मोहम्मद आसिफ सर ने जो है बात की थी कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स भी हैं, इसके रेगुलेशंस भी हैं, ये सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं. ऑल वी नीड इज टू प्रैक्टिस दीज रेगुलेशंस एंड प्रैक्टिस दीज स्टैंडर्ड्स ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकें. Ma'am, here I would like to need your guidance. Here in Saudi, NEOM project, for this chemistry and sustainability, how we can use this one here? What aspects we should take care? In Neon project? Yes, yeah. This in Saudi, there is one new city is being constructed, NEOM, near Tabuk. ठीक ठीक ठीक. Okay, okay. Mega city, right. The thing is, आप हमारे पास जैसे concept of green engineering है, for example. So हम लोग ये कर सकते हैं, incorporate the green engineering principles like minimizing the energy. जैसे आपने अभी हमने देखा कि जो airports हैं हमारे पास, some airports हैं जो कि greenly engineered हैं. They are using क्या क्या चीज़ें, energy efficient procedures use कर रहे हैं वो लोग. वो वाटर रिटेंशन की उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब कि वाटर वेस्टेज के बजाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं. ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग अपनी उस मेगा सिटी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. वाटर रिटेंशन, इसके अलावा हम लोग प्लांट बेस्ड जिस तरह से है, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कई बिल्डिंग्स इस तरह से, इवन पाकिस्तान में भी हम लोग देखते हैं ग्रीन बिल्डिंग जो प्लांट बेस्ड कूलिंग यूज करती हैं. इससे भी हमारे पास एनर्जी जो है वो कंजम्पशन कम होती है, हेंस लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन. Plus using renewable energy resources, for example, like solar, for example, like hydrogen, for example, like मेरे ख्याल है सऊदी अरब में सिर्फ ये दो अवेलेबल हैं. मतलब हमारे पास डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं. ग्रीन इंजीनियरिंग के भी ले सकते हैं हम, ग्रीन सिंथेसिस के भी ले सकते हैं कि जो जो हम लोग केमिकल्स यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज, क्या वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ग्रीनली सिंथेसाइज करें अपने केमिकल्स और नॉट. Electric vehicles. Sorry? Electric vehicles. Yeah, exactly. Instead of EVs, using yeah, diesel electric vehicles. vehicles, exactly. ये सारे components बीच में. Basically, it's the job of the क्या कह सकते हैं contractor और जो manufacturing companies हैं कि आप लोग किस तरह से वो city build कर रहे हैं. Like certifications हैं, जैसे हमने देखा लीड सर्टिफिकेशन है हमारे पास, एक दूसरी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं कि वो
evaluate कर सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग क्या ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनी हुई है या ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं या ग्रीन केमिस्ट्री यूज कर रही हैं, ग्रीन इंजीनियरिंग यूज कर रही हैं. वी हैव एवरीथिंग. हमें सिर्फ थोड़ा बहुत आगे इनपुट देना है. जी, यहाँ पे तो बहुत वो केयर कर रहे हैं। यहाँ पे तो एक टाइटल भी मार दिया तो उस पे भी रिसर्च होती है। वो तो लिजर्ड कोई है डेजर्ट पे, तो उसको भी कहते हैं कि कोई मर ना जाए, उसको भी पकड़ के सही सेफ जगह पे छोड़ के आना है। एग्जैक्टली. और एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे बहुत कीनली जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। That's good. That's good. Biodiversity is very important. वाकई जैसे I gave the example of DDT. DDT बैन हुई थी पाकिस्तान में भी. इसके बहुत ज़्यादा इट्स इंसेक्टिसाइड जो हमारे यूज़ होती है क्रॉप्स के ऊपर. तो पाकिस्तान में भी इसका बैन हो गया था क्योंकि इसने हमारे जो वल्चर्स होते हैं जिसको हम गिद्ध कहते हैं उसकी जो है पॉपुलेशन काफ़ी कम कर दी थी. और उससे क्या हुआ था कि फूड चेन पे काफ़ी इम्पैक्ट आया था क्योंकि एक प्रोसेस जो है वो आपकी अल्टीमेटली दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा होता है. अच्छा मैडम आयशा, मिस आयशा, ये मैं इनसे आसिफ साहब, बड़ी खुशी हुई आप नियोम में, मैं खुद भी तबूक में हूँ। ये जो है ना, असल में आप जो अपने प्रोजेक्ट पर है, बहुत सारी चीजें, अब मुझे अंदाजा नहीं है कि आप किस लेवल पर इसमें काम कर रहे हैं। होता ये है कि कंस्ट्रक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो आप यानी एक तो डिमोलिश जो है ना, अभी मैं देख रहा था इन्होंने 3 होटल्स बनाए हैं जिसमें जो इन्होंने ओनली 5% जो है ना वो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी वो पहाड़ में है तो पहाड़ के साथ ही उसको चिपका रहे हैं, पहाड़ को काट नहीं रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है। डस्ट कंट्रोल आपकी जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को, जो कंस्ट्रक्शन की डस्ट है वो नुकसान पहुंचाती है, आप उसको कंट्रोल करते हैं। आपकी नॉइज है जो आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो अपने आपके प्रोजेक्ट पर जो है वो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। अच्छा, ये जो है आपका जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी डिस्टर्ब करती है, और वो आपको नजर भी नहीं आता कि इसने कितने जानवरों को यहाँ से कितने जो वो रेप्टाइल भी हो सकते हैं, वो इंसेक्ट्स भी हैं, कुछ भी है, तो वो आपके प्रोजेक्ट साइट पर से जो है वो उनको खत्म कर देता है। आपने उनके इनहेबिटेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए वो होते हैं। तो इसी तरह से आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको नुकसान पहुंचा रही होती हैं, आपके एनवायरनमेंट को, आपके इर्द गिर्द को, आपके लोगों को। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल, आप यही कर सकते हैं कि देखें इर्द गिर्द की कौन सी चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है, और फिर उसके लिए जो है ना वो मिटिगेशन का जो है वो प्रोसेस जो है वो आप शुरू कर दें। आप बड़ी गाड़ियां जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, आप उनकी जगह छोटी ले आएं। मुझे नहीं मालूम है कि लिफ्टर्स वगैरह के अलावा कोई और इलेक्ट्रिक आपको गाड़ी अवेलेबल है इस वक्त कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। तो लेकिन ये कर सकते हैं आप कि उनमें जो है उनकी जो फॉसल फ्यूल यूज कर रही हैं उनका इंजन अच्छी कंडीशन में हो, उनके जो साइलेंसर्स हैं, जो आपकी जो हवा में आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और कार्बन मोनोऑक्साइड आप फेंक रहे हैं उनको अच्छे से फिल्टर कर रहे हैं, और यूरो 2 टेक्नोलॉजीज वगैरह या इससे ऊपर वाली अगर कोई टेक्नोलॉजी लगी हुई है तो वो आप उसको देख लें। तो यानी पर्सनल लेवल पे आप ये कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आप जो आपके डिसीजन मेकर हैं उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि उनके डिसीजन जो हैं वो इन्फॉर्म्ड हो। अच्छा, अब सबसे बड़ी जो आप क्वालिटी इसमें वो ये आ गई है कि आपके लिए आसानी है जो डिसीजन मेकर्स हैं उसको इन पर लाने के लिए, वो ये है कि आप उनके बताएं कि यार अगर आप आज नहीं करेंगे ना तो कल आपको मजबूरन करना पड़ेगा। और आज वाला करने से फायदा ये है कि कल को आप सबसे ऊपर खड़े होंगे पाइनियर्स, क्योंकि आगे प्रोजेक्ट ही इस बेस पर दिए जाएंगे कि आप कितने ग्रीन हैं, आप कितने सस्टेनेबल हैं, आप कितने एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। तो ये चीजें जो है बहरहाल फायदा देंगी हमें और हमारे उनको कंपनीज को, तो ये बताने की बहरहाल जरूरत है। जी। Really appreciate. You are very well aware. Thank you. वाकई ये ऐसे ही होगा। पहले हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की बेस पे प्रोजेक्ट्स मिलते थे, सबसे पहले यही प्लान अप्रूव होता था, और अब जो है वो सस्टेनेबिलिटी जो है उसकी बेस पे प्लान अप्रूव हो गए। यू आर वेरी राइट। That was informative. आप में से किसी और ने कुछ ऐड करना हो या कुछ पूछना हो?
Right. I think that's it for all. Thank you for attending this session. It was very informative for me as well. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thanks a lot. Allah Thank you. Hafiz. Thank you.